Hello students, welcome to iExamB and embrace the iExamB learning experience. Students, in my previous video, I had come up with some of the important discussions related to Bear Acts, why they are important for the competitive law exams, what's their importance is, what Bear Acts are. I started off with that. So in case आप में से किसी का भी miss हो गया हो उस particular video को देखना, you can go to the description of this particular video and you can get the link of the previous video which I'm actually mentioning about and you can watch it. But before we move ahead with that, do remember to subscribe to our channel and press on the bell icon so that you can stay tuned and stay updated. कोई भी questions हो, queries हो, कोई भी doubt हो, feel free to connect with us through the email ID or the phone number which is displayed on the screen. Now, as I mentioned you, Bear Act से कुछ important चीजें related उससे मैं यहाँ पे discuss करने वाली हूँ इस particular video में, and so it is not only focusing on the Bear Acts, but let me tell you, it is about PYPs also, that is previous year papers. So how can the Bear Acts from the previous year papers really help you master the law exams is what I'll be discussing. I'm sure many of you must be thinking how to go ahead and strategize your preparation for the competitive law exams, what tools and techniques you should basically adopt so that you can make your preparations very thorough. Lot of things must be coming to your mind. So don't worry. Before I move ahead with the discussion, let me tell you that Bear Acts and previous year paper, understanding of these is very important. These are very important tools that will help you to master for your competitive law exams. Before I move with the discussion, there is a workshop which iExamB is going to conduct 30th of March at 8 p.m. Okay, this basically workshop is related to the IFSCA and SEBI legal exam, wherein if you are preparing for these exams, how you can go about it and other queries which you must be having, you can go ahead and ask them. Now, moving ahead, you must be having a lot of questions and I'm sure आप में से बहुतों के दिमाग में बहुत सारे questions आ रहे होंगे कि ये बार-बार Bear Acts पे, PYPs पे क्यों इतना emphasis है, and some of the common questions I'm sure it must be what exactly are Bear Acts. This I will not touch in this particular video क्योंकि मैंने आपको already बोला मेरे previous video में इससे related aspects मैंने already cover किया है. So you can watch this particular video related to Bear Acts, what they are exactly, their importance and all. For that you can go to the description of this video wherein you will find the link of the previous video. Then आपके दिमाग में ये question आ रहा होगा, are there any specific strategies for going ahead and studying the Bear Acts? Again, the previous one and this video you can use for understanding that. Why you should go through the PYP is very important. You need to understand उसका importance क्या है. Then where to find the PYPs? Again, this question is there. Watch the video till the end. You will get the answer to this also. Now, some of the PYPs I have taken ahead. Don't go through the specific exams which are mentioned because be it SEBI legal, be it RBI legal, be it IBPS SO or any other exam for that matter, be it insurance related exams. Bear Acts and previous year papers, very important they are. Don't worry if you are struggling to go ahead and master the law exams. Don't feel overwhelmed, I would say, with the volume of the legal text or the Bear Acts, how voluminous they are and all other things, because Bear Acts and PYPs are the tool which will help you to ace your law exam. What are Bear Acts has already been taken up. So in very simple, I would say they are the backbone for the entire legal fraternity for your competitive law exam specifically, as we are discussing with respect to that, because Bear Acts क्या है, they are the precise language of the statutes, the laws जो कि गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया. ओके, देन PYPs क्या है, आप देख सकते हो यहाँ पे PYPs हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया है, उसके बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगी हाउ यू शुड गो अबाउट इट. सो दीज PYPs they are giving you a very good information with respect to the competitive exams, because अगर आप सॉल्व करते हो PYPs, उनको गो थ्रू करते हो, it is giving you an idea of the exam, the pattern, you can say the type of questions कैसे पूछे गए थे, difficulty level हो सकता है, many other things you can make up from the PYP. So both of these are very important. Now coming to the question, you can see the question which is displayed over here, where a person gives a guarantee upon a contract that all the creditors shall not act upon it until another person has joined in it as co-surety. So you can see the options over here and you have to select the most appropriate and most nearest correct option. You can write in the comment box of this particular video, आप जरूर से लिखिए ताकि आप क्रॉस चेक कर सको कि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो कि आया है एक्चुअली सेबी एग्जाम में आपको आता है कि नहीं. ठीक है, तो अगर इसके करेक्ट ऑप्शन को हम देखें तो वो सी है. इट इज द गारंटी इज नॉट वैलिड इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से और ये जो ऑप्शन है, यू कैन सी दैट एग्जैक्टली व्हाट इज मेंशन इन सेक्शन 144 में, द प्रोविजन व्हिच इज स्टेटेड ओवर देयर, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एज इट इज एंड देयर हैज बीन अ ब्लैंक वेयरइन यू हैव टू फिल द करेक्ट ऑप्शन जो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से है. नाउ ऑप्शन बी भी लग सकता है बिकॉज इट इज मेंशनिंग द गारंटी इज नॉट वैलिड, और सी में भी आपका है गारंटी इज नॉट वैलिड, बट बी करेक्ट क्यों नहीं है,
C क्यों है? Because it is the most appropriate, accurate with respect to the provision which has actually been stated in the law. So the C is the correct option over here. Then you can see the next question, which is a suit filed under the provisions of Specific Relief Act shall be disposed of by the court. So basically the time frame is being asked over here, within what time frame it has to be disposed of, and the correct option for this is A. Okay, so those of you have written A in the comment box, it is correct. What is option A? Within a period of 12 months from the date of service of summons to the defendant. अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, स्टार्ट किया गया है, and it is actually talking about within a period of 12 months from the service of summons to the defendant, which is in the option. अब ये 12 months जो है आपके दो other options में भी हैं. That creates a near option situation, that creates a confusion. So you have to be very thorough again. Direct reading में, concept के clarity में, and remembering the duration or time period within which a certain thing has to be done. ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है. अगर एक पर्टिकुलर सेक्शन से सेक्शन 20C of स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो जब आप उस सेक्शन को पढ़ रहे हो तो आपको पॉइंटर्स में याद होने चाहिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें वहां मेंशन की गई है. ठीक है, सूट कितने पीरियड में डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, वो पर्टिकुलर डेज मंथ जो भी है, एक्सटेंशन है कि नहीं. ये नहीं कि सिर्फ आपको पता है कि वो 12 मंथ्स में हो जाना चाहिए, आपको पता ही नहीं है कि एक्सटेंशन प्रोवाइडेड है कि नहीं, बिकॉज क्वेश्चन कैन एंड अप फ्रॉम देयर. देन इफ देयर इज एन एक्सटेंशन कितने दिनों का. सो व्हेन यू आर रीडिंग द बेयर एक्ट, व्हेन यू आर रीडिंग द नोट्स, एवरी टाइम यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर मेकिंग द पॉइंटर्स. 3 पॉइंट्स है सेक्शन 2C में जो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है. इन तीनों एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है. आर गेटिंग द स्ट्रैटेजी हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. इट्स नॉट जस्ट कि जो डिस्पोजल ऑफ द सूट के बारे में है बस उतना आपको पता होना चाहिए. देन इट इज अ हाफ प्रिपरेशन आई वुड से. देन यू कैन सी एक यहाँ पे सिचुएशन बेस्ड, सिनेरियो बेस्ड भी आप कह सकते हो. ए, रिसाइडिंग दिल्ली पब्लिशर्स इन कैलकाटा स्टेटमेंट्स डिफेमेटरी ऑफ बी रिसाइडिंग इन मुंबई. बी में सू. ए करेक्ट ऑप्शन. अगर आपने डी सोचा था तो दैट इज करेक्ट. इट इज आइदर इन दिल्ली और कैलकाटा. अब यहाँ पे अगेन आप देखो कि बेयर एक्ट पढ़ना क्यों जरूरी है. सीपीसी का जब सेक्शन 19 आप पढ़ोगे तो बेयर एक्ट में आपको बेसिकली इलस्ट्रेशंस के सेकंड नंबर पे मिलेगा ये एग्जैक्ट सिचुएशन. तो आप देख रहे हो कि अगेन बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ा है थॉरली, यू आर इन अ बेटर पोजीशन बिकॉज एग्जैक्ट सिचुएशंस आल्सो कम, एग्जैक्ट प्रोविजंस आल्सो कम फ्रॉम द बेयर एक्ट. सो यू आर इन अ बेटर पोजीशन व्हेन आंसरिंग द क्वेश्चंस. देन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, द अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within. So the time duration within which it has to be deposited. Then these are the various options you can see over here. Again अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो या फिर फॉर दैट मैटर कोई और भी सब्जेक्ट जहाँ पे कि नंबर ऑफ डेज एंड ऑल इज टू मच ओवर देयर, यू शुड इंश्योर कि आप जो कॉमन नंबर ऑफ डेज है, से फॉर 7 days 30 days एक्सेट्रा, उस पर्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में किन किन चीजों करना है. यू आर प्रिपेयरिंग चार्ट फॉर दैट एंड देन यू आर रिमेम्बरिंग इट. वो इजी वे होगा. आपके पास इतना टाइम नहीं होगा हर समय कि आप एक बार टेक्निक सोचोगे, एक बार कैसे पढ़ना है वो सोचोगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सोचोगे. सो व्हेन यू आर रीडिंग इट, इंश्योर यू हैव द पॉइंटर्स दैट हाउ यू आर गोइंग अबाउट इट. अ स्ट्रैटेजी टू स्टडी द बेयर एक्ट द प्रीवियस ईयर पेपर्स आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब ये क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर ऑफ डेज कितने दिन में करना. अब आप यहाँ देख सकते हो 7 days है, 5 days है, 30 days है, 90 days है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्पेसिफाई करेगी. अब दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी नियर टू ऑप्शंस, क्योंकि नंबर ऑफ डेज इज वेरी कंफ्यूजिंग एंड सब कुछ यहाँ देख सकते हो लेटर पोर्शन जो है एज इट इज है. सो यू कैन गो अहेड एंड राइट करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, आप चेक कर सकते हो, अपना याद है ये पर्टिकुलर प्रोविजन, एंड इट इज ए विच इज 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड. अगेन दिस इज अंडर सेक्शन 123 ऑफ द कंपनीज एक्ट. यहाँ पे भी आप देख सकते हो वर्डिंग्स भी दिए हुए हैं एज पर द बेयर एक्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट जो ये ऑप्शंस है ये भी नियर है तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है. आपको अदरवाइज पता होगा आई एम श्योर, बट देन एग्जाम में जब आप बैठते हो ना, सो 5 days 7 days 30 days ऑल गोस फॉर अ टॉस बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ प्रोविजंस वेयर इन दीज डेज आर कॉमन. तो अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है. आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन बात कर रहा है अंडर विच एक्ट इज द लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिकवरी ऑफ डेट बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज गवर्न्ड. अगेन यहाँ जो भी एक्ट्स मेंशन है इट कैन क्रिएट अ कंफ्यूजन और डाउट इन गोइंग अहेड एंड चूजिंग द करेक्ट और एप्रोप्रिएट ऑप्शन. सो अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन चूज कर रहे हो 5 number and you are mentioning in the comment box, you are correct because 5th number is the correct one. Recovery of debts due to banks and financial institutions. So this particular act is governing the legal framework for recovery of debts by the banks and financial institutions. So basically आप देखो जब भी कोई एक्ट पढ़ रहे हो उसके प्रोविजंस को जानना, ड्यूरेशंस जो भी उसमें मेंशन है जानना ये जरूरी है. तो एक्चुअली वो लॉ क्यों रिक्वायर्ड है, दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बेसिक थिंग यू हैव टू बी अवेयर. आई एम वेरी श्योर मेनी ऑफ यू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स यू थिंक दैट अगर ये सेबी का एग्जाम है, आईबीपीएस, एसओ का, आरबीआई का, दे विल नॉट आस्क वेरी बेसिक क्वेश्चंस, बट एक्चुअली इफ यू गो थ्रू द PYPs you can find that very basic
as this has been asked. So you have to be very clear with those also. Do not ignore those type of provisions also. और ये तो बहुत बेसिक है कि कोई भी एक्ट आप पढ़ रहे हो तो you have to be very thorough with the objective. Now, how can bare acts and previous year papers be used effectively? Talking on to that, आप जब previous year papers देखते हो, कुछ questions जो मैंने यहाँ डिस्कस किया उसके बेसिस पे ही अगर मैं आपको बोलूँ तो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, लीगल फ्रेमवर्क या फिर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, नियर ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको पूछे गए थे, करेक्ट? सो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने से आपको क्या फायदा हुआ? आपको आइडिया मिला कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. सो व्हेन यू आर स्टडीइंग द bare acts, you can keep these as pointers while studying the bare act. अगर आप एक प्रोविजन पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट वर्डिंग्स भी आते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट समझने के साथ साथ थरो रीडिंग लेना है. वहां पे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इलस्ट्रेशंस जो एग्जांपल्स उसको इग्नोर नहीं करना है. लीगल फ्रेमवर्क में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो जब भी आप कोई एक्ट पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ और ऑब्जेक्टिव फॉर विच दैट पर्टिकुलर लॉ इज. देन नियर ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हाउ यू हैव टू गो अहेड एंड बी थरो विद द वेरियस प्रोविजंस. You can make use of these two important tools, you can say, for going ahead and preparing for your competitive law exams. Apart from this, कैसे bare acts और previous year papers को आप effectively use कर रहे हो, कुछ आपके पास suggestions और ideas हो mention कर सकते हो. So with this we come to an end of our today's discussion with respect to the bare acts and the previous year papers. आपके पास एक question था starting में कि previous year papers कहाँ से access करेंगे. So iExamB is having previous year papers with respect to the various competitive exams. Do remember to subscribe to the channel and press on the bell icon so that you can stay tuned, stay updated and make your preparations 50% faster with us at iExamB.